Hello Matuji, you're watching Hornbill TV's Prime Time. Indonesia's National Disaster Management Agency announced today that 7 people were killed and 82 others reported missing following a landslide in West Java province amid reports of heavy rainfall in the area. The Indonesian officials said that landslide struck a village in West Bandung region, noting that the number of missing persons remained high and expressing hope that search and rescue efforts would be intensified today. Indonesia's Climatology and Geophysics Agency had earlier warned of adverse weather conditions, including heavy rainfall in West Java province for a week, according to local Kompas news outlet. The mortal remains of Army Jawan Mohit Chauhan, who lost his life in the Tora road accident, were taken to his hometown in Jajar on Saturday. They were accompanied by vehicles donned with the Indian flag and the public on foot to honor his contribution to the country. A day earlier, a wreath-laying ceremony was held for the 10 Army Jawans who died in an accident in Dora district in Jammu and Kashmir. An equal number of personnel sustained injuries during the mishap. According to the White Knight Corps, the army vehicle carrying troops for an operation slipped off the road while navigating treacherous terrain in bad weather. A day earlier, a wreath-laying ceremony was held for the 10 army jawans who died in an accident in Dora district in Jammu and Kashmir. An equal number of personnel sustained injuries during the mishap. आपके भाई थे, कैसे सूचना मिली, क्या कहना चाहिए? सूचना जी मम्मा का फोन आया था पहले, फिर मम्मा का फोन आया, चोट लगी तेरा भाई का, पता कर एक बार। मैंने यूनिट में फोन मिलाया, उसकी गैल का था कपिल, तो उस दिन बताई ना चोट लग रही है। फिर जी मीडिया पर आ गई थी, 4 बजे देखा, फिर 5 बजे फोन आ गया था जी शाम ने। क्या परिवार में और कौन कौन है? परिवार में मैं हूँ जी, भाई था और भाभी है, मम्मी और पापा। कितने साल पहले भर्ती हुए थे भाई? 5 साल पहले भर्ती हुए थे जी। गांव में एक अलग, चूंकि युवा जब होता है भर्ती तो एक अलग माहौल होता है। हाँ जी। तो किस तरह का उनका नेचर था? बहुत अच्छा नेचर था जी, ना कमांड जान दिया करता मैंने, बोले तू करने रहा कर, सारा कम सब की मैं ही करूँगा, जो भी करूँगा। कब बात हुई आपकी? 3 दिन पहले बात हुई थी जी। घर आने की कह रहे थे? हाँ, घर आने का था मार्च में। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम सानवी शर्मा है और मैं संत ईश्वर भारतीय विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनसू उधमपुर की छात्रा हूं। हमें ये जानते हुए बहुत दुख हुआ कि कल डोडा किश्तवाड़ में आर्मी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उनमें से 10 जवान शहीद हो गए और कुछ जवान घायल हैं। हम यहाँ सब आज एकत्रित हुए हैं जो 10 जवान शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि जो जवान घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शायरिका और मैं संत ईश्वर भारतीय विद्या मंदिर उधमपुर की छात्र हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल जो है डोडा भदरवाह में आर्मी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 10 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। इसलिए आज हमने उनके लिए श्रद्धांजलि दी है उन सबको, और जो कुछ हैं अभी घायल हैं, और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। धन्यवाद। Speaking for the first time since skipping the All India Congress Committee AICC meet, party leader Shashi Tharoor on Saturday said that he had informed his party leaders about his intention not to attend the meeting beforehand. While he said that certain media reports about him skipping the meeting might be true, while others may not be, such things should not be discussed on a public platform. താങ്കൾ അസാന്നിധ്യം വലുതായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചിയിലെ പരിപാടിയിൽ താങ്കൾ അപമാനിതനായ തരത്തിലേക്ക് ഒരു ചർച്ച വരുന്നുണ്ട്. രണ്ടിനുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ്? നോക്കൂ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോട് നേരിട്ട് പറയണമെന്നല്ല. നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ട് മാധ്യമത്തിൽ അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കും, ചില കാര്യങ്ങൾ ശരിയായിരിക്കില്ല. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പബ്ലിക്കിൽ ചർച്ച നടക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഞാൻ പോയില്ല, ഞാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു, നേരത്തെ അറിയിച്ചു ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ വാക്ക് കൊടുത്തായിരുന്നു. ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് വരേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. കോഴിക്കോടേക്ക് വരാനും പോകാനും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥിതി ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഉറപ്പുമായിട്ട് പിന്നെ പാർലമെന്റിലെ എല്ലാ വിധത്തിലും പങ്കെടുക്കും. പാർട്ടിയെ ആ സമയത്ത് കാണാൻ നേതൃത്വത്തിന്. പക്ഷെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ അകത്ത് തന്നെ പറയണം, നല്ലത് മാധ്യമക്കാരുടെ മുമ്പിലല്ല. നിങ്ങൾ
എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോളും, ഞാൻ എന്റെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഭവം ഉള്ളതാണോ ഈ എറണാകുളത്തെ ആ ഒരു വിഷമം? അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതിനെ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് കൂടി ചേർത്താൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു ഞാൻ പാർട്ടി നേതൃത്വം പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരട്ടെ. ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പുസ്തകം പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അത് കേരളത്തിനെ ബന്ധപ്പെട്ടതും എന്റെ ഓരോരോ ചിന്തകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ആ പുസ്തകത്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജയ്പൂർ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവൽ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ മുടക്കേണ്ടി വന്നു രാഷ്ട്രീയ ചടങ്ങിന്റെ കാരണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെയും മുടക്കേണ്ട പറഞ്ഞ ഇവിടെ വന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. A special court under the Prevention of Money Laundering Act has discharged Maharashtra Minister Jagan Pujpal, his son Pankaj Pujpal, his nephew Samir Pujpal and some other accused in the money laundering case linked to the construction of Maharashtra Sadan in New Delhi. All the accused had filed discharge applications in the ED case after Maharashtra ACB had filed a closure report in the same case before the court. The special PMLA court judge Satyanarayan Navandar in its order has observed that the accused cannot be prosecuted under the PMLA after being discharged in the predicate offence. The court noted that the ED attached properties which were allegedly acquired with the proceeds of crime of the predicate offence. But the appellant tribunal of SAFEMA has set aside all the provisional and confirmed attachments orders with the observation that those properties cannot be said to have been acquired using the proceeds of crime. Speaking on the message the Indian Armed Forces will convey through the Republic Day Parade at Kartavya Path, Lieutenant General Bhavnesh Kumar, General Officer commanding Delhi area, said the parade will showcase newly raised units created to meet the demands of modern warfare. He said formations such as the Bhairav Battalion, the Shaktiban Regiment and the Divyastra Battery will be on display, along with a wide range of new generation technologies that have been inducted across the three services and integrated into India's war fighting capabilities. See, the warfare is changing, and because of that, we have to also modernize. So as you know that we have this decade of transformation, and in this decade of transformation we've got 5 pillars in which there is the force restructuring also, and technology absorption is also there. So on Kartavya Path you would see how the newly formed units to meet the requirement of the modern warfare are we have been able to create, and you will see the Bhairav Battalion on Kartavya Path. You will see the Shaktiban Regiment and the Divyastra Battery that will also be showcased, and then the new technology, you will see plethora of the new technology equipment which has been absorbed by the 3 services and which has become part of our war fighting machinery. Each equipment you will see in an absolute operationalized form. Say if I give you an example of the tank T-90 Bhishma and MBT Arjun or the BMP Sarath, they are equipped with their own drones to carry out the surveillance ahead of their area of operation, and they are also equipped with the counter drone system, and also they are the BMP you will see will be carrying the canister launched anti-armor loiter munition. So the way warfare is changing, we have adapted to the new warfare, and there is a huge capability which all our 3 services have achieved. We have attained that, and you saw a very live example during Operation Sindoor when within that span of 87 hours we achieved decisive victory over our enemy, and it was a lovely beautiful integrated operation carried out by the 3 forces
in absolute jointness manner. So you have talked about Operation Sindhu. This is the first Republic Day parade after Operation Sindhu. So what are the key elements which depicts Operation Sindhu in this parade, and what message it conveys to the world? See, the message to the world, if you see the complete parade, it is a very fine blend of, firstly we are celebrating the 150th anniversary of our national song Vande Mataram. So you will get to see the blend of this anniversary. Then the cultural diversity of our nation, how we love peace and, and live in a complete harmony in this nation. And we also would be demonstrating the might of the military prowess of all the three services and all the central armed police forces which we have. So the message to world is very clear. That's a peace-loving nation and lives and looks at growth of everyone in the region, but has got a strong military force to, it is a great deterrence, and so we look at, prospering in the region. Everyone should prosper, but with a strong, very capable forces we have. We'll take a short break. Keep watching. कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक। उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। ये है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। Gauri balpra kiniga dongor hoi jani bole monase. Gauri kane spunky kuigina dana introduce kriasi. Kuntu balpra saigina gauri ge nutrition digina dongor banabule nimide ola lagasi. Itu do Messrs. Didi Poultry Katkati Karbi Anglong Sam kuntu check kedo sordiasi tade pai jabo. Welcome back. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has called an all-party meeting at 11 a.m. on January 27 to discuss key national issues and legislative business ahead of the budget session. The meeting will be held in the main committee room of Parliament and will set the agenda for the session, which will begin on January 28 and runs until April 2nd. The budget session will commence on January 28 and continue till April 2nd with one break. The first phase is scheduled for January 28 to February 13, while the second phase will run from March 9 to April 2nd. The budget session will feature 30 sittings, with the Union Budget 2026 to 27 being presented on February 1. President Draupadi Murmu will formally open the session, addressing members of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The all-party meeting is set to discuss for the session to ensure a smooth proceeding. In the last two sessions, including the monsoon and winter sessions in 2025, the opposition parties have sought to discuss the special intensive revision of the electoral rules which is underway across the country.
Under the center's Smile scheme, 4 children from Lucknow who have given up begging will attend the Republic Day parade in New Delhi on January 26 as special guest. Advisor to Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, Avinash Kumar Awasthi, said that the children Mahi, Preeti, Lucky and Rani will witness the parade alongside Prime Minister Narendra Modi. He added that the Bishka Se Shiksha campaign, aimed at bringing children into education and ensuring their brighter future, has been successful. 24 जनवरी है तो यूपी दिवस की बधाई के साथ साथ इन 4 बच्चों के साथ मैं हूं। माही है, प्रीति है, लकी है और रानी जी हैं और चारों लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ दिल्ली में 26 जनवरी के परेड में रहेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा जो पूरा अभियान चला है भिक्षा से शिक्षा, और जो इस पूरे अभियान की जड़ है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को ऐसा पढ़ाएं कि आगे बढ़ें। माही यहाँ पर हैं। माही, आप क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहती हैं? सैलून खोलना चाहती हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? बिजनेस करना चाहते हैं। और मैडम, आप क्या कर रही हैं? आप दुकान चला रही हैं। तो हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो और हर व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा हो, हर व्यक्ति जो है एक नागरिक के रूप में देश में कंट्रीब्यूट करे। ये जो है आज मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चे आज दिल्ली जा रहे हैं। मैं इनको जो है आशीर्वाद तो दे ही रहा हूं, लेकिन साथ साथ इनके साथ पिछले 3 से 4 साल की जो पूरी यात्रा है उम्मीद संस्था की, बलबीर और उनके सभी साथियों की, उस जर्नी के लिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने विशेष रूप से इनको एक तरह से अपना परिवार ही मान लिया है। हर छोटे बड़े मौके पर इनका प्रोत्साहन किया है। जो अब हमारा गवर्नर हाउस है उसमें अनेकों कार्यक्रम, स्पोर्ट्स के अनेकों कार्यक्रम शिक्षा से जुड़े हुए आयोजित मैडम ने कराए हैं। मैं इस बात से भी जो है बहुत मुझे खुशी मिलती है कि पहली बार जब 101 छात्रों को मुख्यमंत्री बाल विकास योजना का लाभ मिलना था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपने हाथों से इन बच्चों को प्रोत्साहित किया। तो हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भिक्षा से शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए हमें पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि हमारा कोई भी बच्चा किसी भी शहर में, किसी भी सड़क पर, किसी भी गांव में, किसी भी हमारे धार्मिक स्थल में भिक्षा के किसी भी कार्य में जुड़ा हुआ न मिले। और हम ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करके, उनके परिवारों को प्रोत्साहित करके, उनके परिवारों को रोजगार दिलाकर उनको आगे बढ़ाएं। Union Minister for Development of Northeastern Region, Jyotiraditya Skinda, on Saturday said the centre is working to build a structured and globally competitive ecosystem for Tripura's Agarwood sector, aiming to scale up its annual turnover about ₹100 crore to nearly ₹2,000 crore. Addressing a gathering at Uttar Pulbari under the Kadamtala RD block, Skinda said the target would be achieved through expansion of plantations, value addition, modern processing facilities and creation of direct export channels. He was speaking at the foundation stone laying ceremony of an ₹80 crore common processing centre funded by the Ministry of Development of Northeastern Region. The minister said policy measures and regulatory relaxations were being introduced to grant formal industry status to the agar sector at the national level. 2 common processing centres will be set up, one at Kadamtala in Tripura and another at Kolakat in Assam, covering activities from cultivation to processing and manufacture of fragrance products. Thank you, sir. वाइस प्रेसिडेंट ऑल त्रिपुरा। क्या हाल है, कैसे हो, क्या नाम है? अब्दुल हसन। बताओ, अब समझाओ मुझे। ये नेचुरल प्रोडक्शन है सर। ये दाना काटा है सर। इसमें भूचा है और लगभग 4-5 साल के बाद ये मैच्योर हो जाएगी। वो बाद में हम लोग सेक्शन करके धीरे धीरे सफेद लकड़ी हटा के कालो वाली निकलती है। ब्लैक वाला इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो ये इतना लंबा निकलता है यहाँ से, मतलब इतना लंबा? कोई फिर से ज्यादा लंबा नहीं, अलग अलग लंबाई का
छोटा भी है, छोटा बड़ा पर ये अंदर से निकलता है, अंदर से ये प्रोसेस दिखाएंगे, ये काट के अंदर से प्रोसेसिंग चल रहा है सर। हाँ, मुझे दिखा उसका भी बंदोबस्त कर लिया, आप देखेंगे सर। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले सर जो नेचुरली कीड़ा ने काटा है ये प्लांटेशन, ये हम लोग देखेंगे पहले, और बाद में प्रोसेसिंग हो रहा है। हाँ, बाद में फिर जो आर्टिफिशियल करेंगे। जैसे ये नेचुरल पेड़ है, हाँ नेचुरल पेड़ में क्या होता है, कीड़ा इसे घुसता है, घुस के अंदर ये काटता है, बेसिकली कीड़ा ने इन्फेक्शन करता है, वो इन्फेक्शन से ही होता है। जैसे ये ऊपर में भी जैसे इधर कीड़ा वो नेचुरली इन्फेक्शन है। और ये कीड़ा का साइज क्या होता है? कीड़ा भी दिखाएंगे सर। हाँ, वो भी दिखाना। 1 से 1.5 इंच तक लंबाई। Over 8,000 flights across the United States, which were set to take off over the weekend, have been cancelled as a major storm expected to wreak havoc across much of the country bears down, threatening to knock out power for days and snarl major roadways. Around 140 million people were placed under winter storm warnings stretching from New Mexico to New England. The National Weather Services issued a warning of widespread heavy snowfall and a dangerous band of ice extending from eastern Texas to North Carolina, with forecasters cautioning that ice-related damage could rival hurricanes-level destruction. By Friday night, freezing rain and sleet has begun falling in parts of Texas, while Oklahoma experienced snow and sleet. After battering the south, the storm was forecast to push into the northeast, bringing up to a foot 30 centimeters of snow from Washington through New York and Boston. Governors in over a dozen states issued emergency declarations or urged residents to remain indoors. Texas Governor Greg Abbott said that state's transportation department was pre-treating roads and advised people to stay home if possible. According to FlightAware, more than 3,400 flights were delayed or cancelled on Saturday, with over 5,000 cancellations reported for Sunday. Travelers like Angela Ekstrom, whose flight from Houston to Omaha was cancelled, were forced to reroute, highlighting the widespread travel disruptions caused by the storm. Saina Nehwal brought the curtains down on her decorated career. While she did not officially announce retirement, but mentioned in a podcast that she had stopped playing, citing long-standing injury issues. Saina's last competitive match came in 2023, where she suffered multiple first-round exits. Nehwal, who scripted history by winning a bronze medal in the women's singles badminton event at the London 2012 Olympics, played her last competitive badminton match during the Singapore Open in 2023. Heartfelt farewell messages have filled in Twitter. Indian batting legend Virat Kohli lauded badminton stalwart and Olympic medalist Saina Nehwal on the conclusion of a successful career, congratulating her for putting India badminton on the world stage. Two-time Olympic medalist PV Sindhu came up with a poignant wish for her senior rival Saina Nehwal on her retirement. Sindhu took to social media to acknowledge the contribution of Saina to Indian badminton, saluting her efforts to show the path that she walked along to become one of badminton's most successful shuttlers. Sachin Tendulkar, VVS Lakshman, Mitali Raj, Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, his son Nara Lokesh, Union Ministers J. Kisan Reddy and Kiran Rijiju also congratulated her. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.